Good morning, class 11. Welcome back to our online classes. And today we are going to start the another topic of chapter number 3, that is a motion in a plane. Okay, in our last class we have started the chapter number 3 and with the basic concept of the chapter, and we have studied about the vector quantity. In the last class we have discussed about the what is the difference between the vector quantity and what is the vector quantity and the scalar quantity, and we have taught about that the quantity that consists of a direction and a magnitude is called a vector quantity, and the quantity that consists of a only magnitude, that is a scalar quantity. For example, if we say speed and velocity, then we will talk the speed have only a distance, sorry, it has only a magnitude value. So speed is a scalar quantity, and if we say about the velocity, it consists of a both distance and magnitude. Direction is also there, so that's we say the velocity is a vector quantity. Okay, now then afterward we have discussed about the different definitions of the scalar and vector quantity, some definition related to the vector quantity. Then we have talked about the vector addition. In that case we have discussed the general things about the vector addition, how the vector is represented and how we do the addition there. Today we are going to discuss about the analytical of a vector addition, analytical method of a vector addition. Means today we are going to analyze that how we do the vector addition. While taking the different law, we will discuss about the triangular law and again then afterward parallelogram law. These both derivations are very important regarding to your examination also. Okay, so let me study about the triangular law. What is a triangular law of vector addition? You can see here in the figure, the vector A is represented by the one side of a triangle and vector B is represented by the another side of a triangle. What will be the resultant? That will be the A plus B, and that is denoted by the third side and bigger side, we can say bigger side of a triangle. मीन्स हमने क्या पढ़ा है बेटा, कि हमने पढ़ा है कि अभी तक कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड बी. वेक्टर ए हमारे ट्राइंगल के एक साइड से रिप्रेजेंट होता है और वेक्टर बी हमारे ट्राइंगल के दूसरे साइड से रिप्रेजेंट होता है. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिजल्टेंट एंड दैट विल बी रिलेटेड टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल. वो हमारे थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल से रिलेट करता है, रिप्रेजेंट होता है. लेट मी सपोज दिस इज अ O, this is a P, this is a Q, this is a triangle. Now we will draw some construction here. What will be the construction? Draw the perpendicular from the Q, increase the side OP and meet them into the one point, and that is a N, PQ N. Okay, we have got the triangle here. Now if we talk about the side PQ, ये साइड हम PQ की बात करें, PQ is the side here. Now if this is a making an angle of theta here, then what will be the value of Pn? Remember one thing, that is the very important part, कि अगर हमारा कोई एक साइड दिया हुआ है, suppose that the side is given here like this and that is making an angle of theta. This is the side A, this is the vector A, we can say here. Then what will be the value of this vector? This will be the A cos theta, and in the perpendicular direction the vector is here, this will call as A sin theta. इसको याद रखना कि जिसके साथ एंगल ड्रॉ होता है उसके साथ cos थीटा होता है, जिसके साथ एंगल ड्रॉ नहीं होता है इन अ परपेंडिकुलर टू द दिस डायरेक्शन A cos थीटा, A cos थीटा के परपेंडिकुलर जो दूसरा साइड ड्रॉ होगा दैट विल बी द A sin थीटा. तो ये याद रखना सिंपल सा, जिसके साथ एंगल ड्रॉ होता है दैट विल बी द cos थीटा. सो व्हाट वी कैन से, दिस विल बी द B cos थीटा बिकॉज ऑफ द एंगल वी हैव हियर, एंड दिस साइड विल बी द B sin थीटा. ओके, हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी कंसीडर कर सकते हैं. यू नो अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री. इफ वी मेक द ट्राइंगल दिस वन and this we have taken here Pn and this one is here Q. Then if we talk about the cos theta is a base upon hypotenuse and the base is here Pn upon hypotenuse is here PQ upon PQ.
अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड इन दिस ट्राइंगल बेस इज हियर Pn एंड हाइपोटेनस इज हियर PQ. You know very well the side in opposite to the direction of the 90 degree is always hypotenuse. Then what will be the value of Pn? Then Pn will be PQ cos theta, and PQ is here PQ. This is the A. We can say, or we can say this is the B. Here we have represented with the B. Then this will be the B cos theta. वही चीज जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, उसी चीज को हमने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से डिफाइन कर दिया. दैट विल बी द B cos theta. Okay, now let me start the derivation. Remember that once again, this is the very important derivation of this chapter. Okay, now let me find the resultant of the magnitude of the resultant vector R. What will be the magnitude here? Now from Pythagoras theorem we know, if we apply the Pythagoras theorem in triangle PQN, if we apply the Pythagoras theorem, apply here, then here will be the PQ square is equal to PN square plus QN square. This is a Pythagoras theorem. You know very well. What about the Pythagoras theorem? That is given here. The square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the opposite sides. That is called the Pythagoras theorem. Let me solve here questions. Put the value of PQ here. What is the PQ here? This is the vector A and this is the vector B. Then PQ here will be vector B, magnitude of vector B square is equal to, if we talking about the square value, ध्यान रखना, अगर स्क्वायर किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड. इसको हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करते, पहले इसमें ना करके हम पहले बड़े वाले में अप्लाई करते. सो इट विल थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा. वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन बिगर ट्रायंगल, दैट इज अ ONQ. इन अ ट्रायंगल ONQ पहले इसमें करेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा. वी आर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम. नाउ द पाइथागोरस विल बी OQ square is equal to ON square base plus perpendicular QN square. You know very well, the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the opposite two sides. Now we know OQ is here, the value of OQ is here R. It will be R square is equal to ON. We can write this ON with OP plus PN. ON को हम क्या लिख सकते हैं? OP plus PN. It will be a OP plus PN square plus QN. QN is a B sin theta. B sin theta whole square. Okay. Now open the bracket, A plus B whole square. This will be OP square plus PN square plus twice of OP into PN plus B sin theta whole square. We have done the square value here. Now put the value OP. OP is here vector A. We can write here A square plus PN. PN is here B cos theta. B cos theta whole square plus twice of OPPN. OP is here A and PN is here B cos theta plus B sin theta whole square. Now take these two signs together. It will be a square plus B square is common, then it will be a sin square theta plus cos square theta. ये हमारा sin square theta plus cos square theta हमने ले लिया plus 2AB cos theta. This will be the one, you know very well. So here will be the A square plus B square plus 2AB cos theta. That is the value of R square. Then what will be the R here? R will be under root A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the magnitude of resultant vector that is represented by the OQ. इसका magnitude क्या हो जाएगा? Under root A square plus B square plus 2AB cos theta. Okay.
take the screenshot of this part so you can be able to easily to copy that. either you can pause the वीडियो को बेटा आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आसानी से इसको कॉपी किया जा सके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल बीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बीटा? सी हियर, like this, tan beta is equal to, what is the formula for tan? Perpendicular upon base. Perpendicular is here bn, bn upon base is here on. Now we can write here bn is here b sin theta upon on. On is here op plus pn, op plus pn. Put the value b sin theta upon op. OP is here A plus B cos theta. This is the value of tan beta. So what is the formula for angle? That will be the B sin theta upon A plus B cos theta. This is here. That is the direction, or we can say the angle between the two vector. This is the triangular law of vector addition. Vector addition का ये triangular law है. Okay. Copy it down. So we will do the another law, that is the parallelogram law. Okay, now again the next topic is here parallelogram law. In this law we are going to discuss about the again what will be the resultant of the two vector. Let me suppose the vector is represented by the one side of a parallelogram, that is the OP, and vector B is represented by the another side of a parallelogram, that is the OS. Then what will be the resultant here? The resultant R will be related by the A plus B. Now again the derivation will be same here. Whatever we have done the in last question, last derivation, it will be similar to the that one. जैसा हमने पीछे किया है उसी तरह ये भी similar है. Now again all the part is same here. Again we will draw apply the Pythagoras theorem on a triangle ONQ. Again we are going to apply the Pythagoras theorem. Then here from triangle ONQ, apply Pythagoras theorem. Apply Pythagoras. Now what is the Pythagoras theorem? OQ square is equal to QN square plus ON square. Then what is the OQ here? OQ will be here R square is equal to ON. QN is here B sin theta whole square plus ON square. ON we can write the ON with OP plus PN. OP plus PN square. Again we will apply the formula A plus B whole square. What will be here? B square sin square theta plus OP square plus PN square plus twice of OP into PN. Put the value. It will be B square sin square theta plus OP. OP is here A square plus PN. PN is a B cos theta, then it will be a B square cos square theta plus twice of OP. OP is a vector A into PN is a B cos theta. Again we will do the same here. Take the B square common. So here will be A square plus B square is common here. Sin square theta plus cos square theta plus 2AB cos theta. Okay. The value of this will be the 1. So we can say A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the value of R square. And R will be under root A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the final value of the resultant in the case of the parallelogram law. What will be the value of beta? Then tan beta will be perpendicular upon base.
perpendicular is here b sin theta upon base is here a plus b cos theta. It is similar to the last one, whatever we have done there. If we talk about the tan theta, then we can also find the angle here tan theta. Okay, this was the similar derivation to the last derivation we have done there. Okay, let me do some questions regarding to these both derivation. Now class, let me see some questions here. The first numerical is given here in your practice paper. We have a pentagon here. We need to prove the sum of the side AB plus BC plus CD plus DE plus EA is equal to 0. ये हमें prove करना है. Now if we talk about the direction of AB, the direction of AB will be like this: BC, CD, DE and EA. And what is the direction of AC? The direction of AC is like this and direction of AD is like this. Okay. Now let me start from here, from LHS. Let me see what will be here. If we talk about the AB plus BC, this is one vector AB and this one is the another vector BC. Then what will be the resultant? The resultant will be AC. So we can say in the place of this we can write AC. Rest will be the same, CD plus DE plus EA will be this one. Now again the side AC plus DC, what will be the resultant of AC plus DC? It will be the AD. AC और DC का resultant क्या होगा? AD. So in the place of AC plus CD, CD is here DAD. We can write here AD plus DE plus EA. कैसे होता जा रहा है? With the triangular law of addition. हम एक ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं. ए बी और बी सी का ट्रायंगल है, दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसका रिजल्टेंट ए सी. दूसरा ट्रायंगल है ए सी प्लस सी डी, उसका रिजल्टेंट है ए डी. एंड द लास्ट वन इज ए डी प्लस डी ई. द ए डी प्लस डी ई विल बी ई ए. ए डी प्लस डी ई, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? ए ई. सो वी कैन राइट हियर ए ई प्लस ई ए. नाउ सी हियर the direction of AE will be in this direction and EA is in opposite direction. We can also write AE plus minus AE. EA को हम क्या ले सकते हैं? minus AE. These both will be cancelled out and answer will be 0. It is equal to RHS. ये हमारा RHS के इक्वल हो गया. इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं. Let me see the another question. Now let me see the question is given here. The boy travels 10 km north and due to the north, here will be the due to the north, and then 7 meter due to the east. Find the displacement in a, this is the meter, displacement of a boy. In this type of a question we will consider the sides here like this. We have considered the direction first. North, south, east, west is here. Okay, let me consider the direction is here. उसने बोला है the boy travels 10 km due to the north. पहले यहाँ से स्टार्ट करता है O से and it goes 10 km. 10 meter is here. A at a point A north की तरफ गया, यहाँ से चला north की तरफ गया 10 km. And then 7 meter due to the east, और वो ईस्ट की तरफ गया 7 मीटर लाइक दिस. यहाँ पे आया 7 मीटर. दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. उसने बोला फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉय. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मीन्स द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से सबसे छोटा डिस्टेंस जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? Displacement will be OB. It means we need to find the resultant here. हमें इसका resultant find करना है. ये हमारा 10 मीटर है like this. Here is a 10 meter. What will be the resultant? OB. Now by using the triangular law, then OB is here. OB is equal to under root
ए स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा इसका रिजल्टेंट है। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमने अप्लाई किया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट विल बी द वैल्यू, अंडर रूट 100 प्लस 49, it will be 149. Now if we will find the value, it will be the 149 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। 149 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12.21 मीटर। दिस इज द AB, 12.21 मीटर। व्हाट विल बी द एंगल हियर, ये एंगल क्या होगा, थीटा। देन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस OA। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू AB इज हियर 7 मीटर अपॉन OA 10, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.7 and the value of 0.7 is a 35 degree, near about 35 degree. So what will be the direction here, 35, direction will be 35 degree towards northeast direction, 35 डिग्री टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से 35 डिग्री पर ये होगा। सो दिस वाज अ क्वेश्चन। ओके, होप सो आपको आज समझ में आया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा, ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ का डेरिवेशन किया, उसके बाद ट्रायंगुलर लॉ से रिजल्टेंट फाइंड किया, पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस आपको मैं और कराऊंगा और उसके प्रैक्टिस पेपर में दूंगा, उसको आप करना। अगर नहीं है तो आप मुझे बताना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको एक बार डिस्कस करेंगे। ओके ओके, लेट वी सी वन मोर क्वेश्चन। एट व्हाट एंगल डज द टू फोर्स P प्लस Q एंड P माइनस Q एट, सो द रिजल्टेंट्स बी अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। हमें दो फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है। F1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, P प्लस Q, एंड F2 दिया हुआ है P minus Q, and resultant R is given here under root 3P square plus Q square. We know the formula. What is the resultant here? Resultant R will be under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta. हमें वहाँ पे A और B नहीं दिया, वो F1 F2 दिया, तो हमने F1 F2 पुट कर लिया। पुट द वैल्यू here. What is the value of R? Under root 3P square plus Q square is equal to F1 square under root F1 square is here P plus Q whole square plus P minus Q whole square plus 2 P plus Q P minus Q cos theta। ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया F1 F2 की वैल्यू। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी विल रिमूव द अंडर रूट हियर, इट विल बी 3P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर। अप्लाई द फॉर्मूला हियर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस माइनस 2PQ प्लस 2P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर cos थीटा। 2PQ and 2PQ cancel out, P square plus P square 2P square, 3P square plus Q square is equal to 2P square plus 2Q square plus 2P square minus Q square cos theta is here। okay, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो तो we will get here 3P square minus 2P square P square, Q square minus 2Q square minus Q square is equal to P square twice P square minus Q square cos theta। सबको इधर ट्रांसफर कर दो। व्हाट विल गेट द cos theta? Cos theta is equal to P square minus Q square upon 2 P square minus Q square, P square Q square cancel out, it will be 1 by 2। and what is the value of 1 by 2 in case of the cos theta? It will be the cos 60 degree, so we can say theta is equal to 60 degree। This is the answer here। so what will be the angle here?
द एंगल विल बी द 60 डिग्री। ओके, सो इसके बाद के बाकी के जो क्वेश्चन है आप लोग को सीट में प्रोवाइड कर दूंगा, सीट से आपको सॉल्व करना है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। इसको आप नोट कर लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।